Hello everyone, welcome back to the channel again. So far we have gone through the basic understanding of vector spaces, that is properties of vector spaces, the dimensions and basis. Before that we have understand linear dependence and independence of vectors, right? So today, as I promised in the last session, we are supposed to work on some problems, and these problems are going to kind of enhance our understanding with the topic. All right. तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ये जो सब स्पेस है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, राइट? यू कैन सी दैट देयर आर 4 क्वेश्चंस एंड बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज सब स्पेस, राइट? तो हम इनमें से कुछ एक टॉपिक्स कुछ एक क्वेश्चंस चूज कर लेंगे, राइट? यू कैन सी इवन फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन फाइंड 8 सब parts. So instead of going through all the parts, we can pick out 2-3 parts and solve for them, right? Similarly for second question we can do that. Otherwise it's going to kill the entire session, right, working with this these questions only, right? तो हमारा main purpose है that we can enhance our understanding, we can sharpen our understanding with the topic, right? Or second thing, along with the solving of these questions, we are going to learn how to present our answer in front of the examiner, right? Such I mean it's just to grab maximum marks. All right. क्योंकि अगर हमारी जो आंसर बुक है वो ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाएगी हमारे काम को, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू लूज मार्क्स. टू अवॉइड दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रेजेंट आवर वर्क in front of examiner. All right, so without wasting time, let's begin with the topic, that is questions, right? तो रैंडमली कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं. चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट? ठीक है. अभी मैं केवल एक बेस बिल्डअप करूंगा आपका कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है दैट दीज आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ आर क्यूब, राइट? तो फर्स्ट कंडीशन हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी, हमेशा प्रोवाइडेड ही होगा दैट इफ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रूव for subspaces, then definitely that particular set is going to be subset of the given vector space. All right. उसके बाद हमें बोल रहा है कि सब स्पेस है, ये प्रूव करना है. सो रिमेंबर व्हाट वाज द कंडीशन फॉर सब स्पेस. पहला कि वो जो भी पर्टिकुलर सेट जिसको हम सब स्पेस प्रूव करना चाह रहे हैं दैट सबसेट दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस, राइट? एंड सेकेंडली कि वो सबसेट खुद में एक वेक्टर स्पेस है, राइट? और वेक्टर स्पेस के लिए कंडीशन क्या थी, right? For vector space, what we had 4 conditions basically, and these are not only the 4 conditions, but इनको हम पहले करते हैं और अगर ये satisfied हैं तो later on जो भी conditions हैं वो हम आराम से satisfy प्रूव कर सकते हैं उनको, राइट? ठीक है. बट मोरलेस ये 4 प्रॉपर्टीज सॉल्व करने से, इन 4 प्रॉपर्टीज से वर्क करने से हमारा जो सॉल्यूशन है वो सामने आ जाएगा निकल के. ऑलराइट. तो पहले क्या था, closure under vector addition, right? It's not mandatory to write this thing closure under vector addition. You can also write it closure with respect to addition. All right. You can also write closure with respect to addition. Okay. So no need to kind of hesitate in writing that. Second is closure with respect to scalar multiplication. Oh, I'm sorry for this because it is actually crossing this thing, this scroll bar. So let me write it here. Let me remove this. Close under scalar multiplication. Third thing is what? Existence of identity. Identity with respect to what? With respect to multiplication or addition? Definitely we are talking about addition, right? Then we have fourth thing. And remember, identity becomes different when we are changing operation. If we are changing addition to the multiplication, then identity becomes 1, right? Here the identity is 0. Second, the existence of inverse.
right? Identity means identity, elements, inverse means inverse element, right? These four things. अच्छा, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को चूज करें तो ऐसा नहीं है सबको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये भी जब हम आई लेट यू नो दैट हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल, राइट? क्योंकि जरूरी नहीं है सबको सॉल्व करना पड़े, हो सकता है सबको भी सॉल्व करना पड़े। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं सबको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, केवल एक हिंट आपको दे रहा हूँ कि कैसे पिकअप करना है, किस पॉइंट को देखना है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? अपनी ये कंडीशन को ध्यान रखना जो कंडीशन यहाँ प्रोवाइडेड है, और अपनी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना, अपने इन द सेंस वेक्टर स्पेस की अपनी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ काम पता नहीं आएगी नहीं आएगी। ऑलराइट, तो इट इज x1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x1 कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? तो क्या ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर सकती है? आई गेस नो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं, लेट्स से ये पर्टिकुलर जो सेट है इसको नाम दे दो कुछ, लेट्स से इट इज सम s, एंड लेट्स से वी आर फाइंडिंग सम अल्फा which is alpha belongs to s, which is, let's say, is alpha equal to some x1 prime, x2 prime and x3 prime. रिमेंबर ये कंडीशन सब पे लगेगी, x1 is greater than 0, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर टर्म जो है that is greater than equal to 0, right? And we have beta which is belonging to s, right? और बीटा का एक्सप्रेशन क्या है? that is some, let's say, x1, x2 and x3. Now try adding these, that is alpha plus beta, what you will get? जब आप ऐड करोगे इसे तो आपको मिलेगा x1 plus x1 prime. अच्छा, सीधी सी बात है, अगर यहां पर आपने कंडीशन लगाई हुई है that x1 prime is going to be greater than equal to 0, और यहां पर कंडीशन लगी है that x1 is going to be greater than equal to 0, think of, is it going to violate that? Definitely x1 plus x1 prime is going to be greater than equal to 0. There's no violation. तो क्लोजर रूल आपका कोई वायलेशन नहीं करेगा, चिंता मत करो, राइट? ठीक है। सिमिलरली लुक फॉर द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इज इट गोइंग टू वायलेट? इट मे वायलेट, राइट? एंड आल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इट मे वायलेट, राइट? लेट अस सी हाउ। चलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ये मैं क्विकली यहाँ पर इसलिए करवा रहा था ताकि आप क्विकली उस पॉइंट को पिकअप कर सको जहां से स्टार्ट करना है, राइट? Instead of going through the lengthy process, right? You can immediately kick start with it. तो अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, राइट? स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज यू what is it? See, if you're choosing alpha from s, alpha belongs to s, right, such that your alpha is same x1, x2, x3, right? कुछ भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल के लिए इसको लिया था, तो यू फॉरगेट इट नाउ, राइट? अब वो भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि क्विक स्टार्ट कहाँ से करना है ये समझ में आ जाए। तो ये दिख रहा है यहाँ पर कि दिस इज नॉट गोइंग टू वायलेट फर्स्ट लॉ, बट सेकंड कैन बी। सेकंड क्यों हो सकता है देखते हैं अभी, इसी के लिए प्रॉपर सॉल्यूशन दे रहा हूं। यहाँ पर देखो कैसे होगा। अगर अल्फा हमने ले लिया, नाउ थिंक हमारे पास एक स्केलर है, लेट के बी अ स्केलर, के एक स्केलर, और इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, सो दैट के इज लेसर देन 0, कोई -1 -2 कुछ भी हो सकता है, राइट? नाउ अब मल्टीप्लाई करो जरा के अल्फा, व्हाट यू विल गेट? you'll get k times x1, then k times x2, right, then k times x3. all right, अब जरा देखो फर्स्ट कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? that your element at the location, at this particular location, just a second, I was trying to change the color but it's not changing, now it is। फर्स्ट लोकेशन देखो, ये क्या कहती है? ये लोकेशन के लिए बोल रहा है that this cannot be negative, right? Isn't it? Now अब यहां पर देखो जरा, इस लोकेशन का क्या हो गया? What is happening here? That kx1 is actually negative, क्योंकि x1 तो पॉजिटिव है और k नेगेटिव है,
तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट तो नेगेटिव ही होगा। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब दिस पार्टिकुलर term is not in S, right? Or you simply say that K alpha does not belongs to S. जब ये नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या, क्लोजर नहीं है विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इट्स गॉन, राइट? गेटिंग इट? बस एक जगह डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका मतलब डिस्क्वालीफाई होगा जस्ट अपने यूपीएससी एग्जाम की तरह, राइट? यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरह। इफ यू गेट डिस्क्वालीफाइड सी सेट, इट मीन्स यू आर डिस्क्वालीफाइड either CSET or mains. CSET means the other paper is also aptitude paper, but rather saying CSET, people say that's a GS, right? Because it contains questions from history, polity, and general awareness about that, right? But basically we call this as aptitude, right? Aptitude towards general awareness, right? How you are aware about the surrounding and the things which are going on in future, also in present, and what had happened in the past, about that. ऑलराइट, लीव इट। तो जैसे वहां पर किसी भी एक स्टेज में डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया, वैसा ही यहां पर अगर ये एक प्रॉपर्टी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, इसका मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। गेटिंग इट? तो इट इज नो लॉन्गर अ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस नाउ। गेटिंग इट? ठीक है। अब इसको अगर एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? अच्छा, मैं इसको स्क्रॉल अप कर रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ स्पेस थोड़ा कम है। हाउ टू प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर इन एग्जामिनेशन हॉल? let us write it here. I'm assuming that the question is written here. This is the section for question. Here we have question, right? In this particular section, ठीक है? And you might be aware that यहाँ पर इस तरह से lines होंगी, and this here, राइट? और इस स्पेस में आपको लिखना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया होगा क्वेश्चन का, दैट यू हैव दिस इज x1, x2, x3 2, right? Such that your x1 is greater than or equal to 0, that is it cannot attain a negative value, right? Now what to do? यहाँ कैसे स्टार्ट करना है? अगर आपको पूरा पेज यहाँ प्रोवाइडेड है, फुल पेज प्रोवाइडेड है, ठीक है, और केवल सिंगल यही पूछा हुआ है, इट मीन्स यू हैव टू डू ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज यू हैव टू प्रूव, गो थ्रू द फर्स्ट क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, and then existence of identity, existence of inverse, all the four properties you need to, right? I'm repeating again. If you are provided with the entire space, यहाँ पूरा पेज आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, फुल पेज, राइट? सपोज ये फुल पेज आपको प्रोवाइडेड है, इसका मतलब है सीधी सी बात है, जिसने भी क्वेश्चन फ्रेम किया है वो आपसे डिमांड कर रहा है कि आप सब कुछ चारों प्रॉपर्टीज को सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप केवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को देखोगे तो वो देखो ना, यहाँ पर ये जो हमने किया अभी कितने छोटे से सेक्शन में खत्म हो गया, राइट? बाकी सेक्शन बचा रहेगा आपका। गेटिंग इट? तो इसका मतलब वो पर्सन डिमांड कर रहा है आपसे दैट यू शुड सॉल्व फॉर द ऑल द फोर प्रॉपर्टीज। लेकिन अगर आपके पास इतना ही सेक्शन दिया हुआ है, छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है सपोज, एंड इट इज डिमांडिंग टू प्रूव दैट वेदर इट इज सब स्पेस और नॉट, राइट? ठीक है, in that case solve only for the initial thing, that is the required thing, that is केवल स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया और that is okay, right? ठीक है, तो चलो हम कंसिडर करते हैं कि हमें फुल स्पेस नहीं दिया हुआ है, कम स्पेस दिया हुआ है और उसमें हमें सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नो नीड टू गो बियॉन्ड दीज लाइन्स। यहाँ कुछ भी लिखोगे, यहाँ कुछ भी लिखोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक? और ध्यान रहे, हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग सिर्फ प्रीलिम्स में है, बट ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग मेंस में भी है। चौंक गए? मेंस में पेनल्टी मार्किंग होती है, उसको नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, राइट? एक्चुअली नेगेटिव मार्किंग सही टर्म नहीं है, लेकिन वो पेनल्टी मार्किंग है। पेनल्टी मार्किंग अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी है एग्जाम में, कहीं पर बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लिखा फिर काट दिया, फिर कुछ लिखा फिर काट दिया, ठीक है, यहाँ लिखा फिर यहाँ कुछ काट दिया, और इतना छोटा छोटा लिखा पता नहीं चल रहा है, ऐसे करके रनिंग हैंड में लिखते चले गए, पता नहीं चल रहा है क्या है, तो एग्जामिनर उस पर पेनल्टी मार्किंग देगा। लेट्स से फाइनली -5 और -10। ये क्वेश्चन पे नहीं मिलेंगे, ये जो फाइनल एडिशन टोटल मार्क्स
लिखने के बाद ना वो अपनी तरफ से पेनल्टी लगा देगा कि दैट यू आर एक्चुअली made him annoyed or her annoyed and now she or she is going to push you back, right? तो उसमें कुछ ना कुछ पेनल्टी मार्क्स होते हैं एंड आई गेस मैंने एक पर्सन के देखे थे, इसमें -20 पेनल्टी मार्क्स लगे हुए थे. दैट्स रियली काइंड ऑफ नॉट अफोर्डेबल, राइट? क्योंकि आप अगर सोचो वो 20 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, क्या पता वो 20 मार्क्स बॉर्डर लाइन क्रिएट कर रहे हो कि आप 20 मार्क्स मिले बॉर्डर के उस तरफ, 20 मार्क्स मिले बॉर्डर के इस तरफ, खत्म कहानी, राइट? तो इसके लिए प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. तो लेट्स सी कैसे प्रेजेंट करना है इसको. तो क्वेश्चन यही है अपना, दैट वी नीड टू प्रूव वेदर इट इज अ वेक्टर स्पेस और सॉरी सब स्पेस और नॉट, राइट? और हमें हाफ ऑफ द स्पेस माने आधा पेज प्रोवाइडेड है, उसी पे हमें काम करना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो. ऑलराइट, चेकिंग closure property sorry with respect to, ये मैं कंप्लीट लिख रहा हूं, कंप्लीट नहीं लिखो चलेगा, ठीक है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये यहां पर ये देखो मेरी मिस्टेक है, बाहर नहीं जाना. ऑलराइट, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर प्रेजेंटिंग थिंग्स. जैसे कि यहाँ पर आप शुरुआत भी कर सकते हो इस तरह से, फॉर द गिवन वेक्टर चेकिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर चेकिंग क्लोजर प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन फॉर द गिवन वेक्टर, किसी तरह से, ठीक है ना? तो फॉर द गिवन सबसेट. ऑलराइट, नाउ स्टार्ट हो जाओ. लेट S इक्वल टू this thing x1 x2 x3 such that your x1, that is the first element, cannot be negative, right? Let alpha belongs to S, right? such that को S dot T dot भी लिख सकते हो, ठीक? such that alpha इक्वल टू, अच्छा एक चीज और, ये मैं इतना डेंस कर रहा हूँ, इसको डेंस की जगह अगर स्पेस अवेलेबल है तो थोड़ा साफ साफ लिखो और बड़ा बड़ा लिखो. सच दैट अल्फा इक्वल टू x1 x2 x3. नाउ लेट k be a scalar such that k is less than 0, right? Now k times alpha is going to be kx1 comma kx2 comma kx3, right? Now you can see as k is less than 0 and x1 is greater than equal to 0 implies that you got kx1 lesser than 0. This says that your k alpha does not belongs to S, right? Hence you say given subset is not a subspace. ऑफ आर क्यूब, राइट? इसको बॉक्स में कर दो सो दैट पर्सन नोज ओके व्हाट एग्जैक्टली यू हैव यूज्ड टू प्रूव इट इज नॉट अ सबस्पेस, राइट? सो इट्स डन, गेटिंग इट नाउ. किस तरह से करना है, ठीक है? ये एक्चुअली क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे अपनी वॉइस के साथ साथ आसपास फैली हुई चीज़ें भी मैनेज करनी है. इवन यू कैन इफ़ यू आर एबल टू हियर क्रॉ वॉइस, यहाँ पर कौवा भी काँव काँव करे जा रहा है मेरे कान के ऊपर. तो कई चीज़ें मैनेज करने के साथ मैंने ये, और डेफिनेट सी बात है यही प्रेशर एग्जाम में भी होगा, राइट? यही प्रेशर एग्जाम में भी होगा, तो किस तरह से मैनेज करते हुए चलना है.
ठीक है, धीरे धीरे चलेंगे और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्रेजेंटेशन का कैसा तरीका होना चाहिए, राइटिंग सुधारनी है, ठीक है, वे ऑफ मेकिंग डेंस और मेकिंग रेयरिफाइड लेटर्स, दैट इज ऑल्सो वी नीड टू मैनेज, ठीक है, और एंडिंग क्या है, ऑलराइट, ठीक है ना, तो ये सब मैनेज करना है। चलो अच्छा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। नाउ अब क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं हो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट यू आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, सो प्लीज़ 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 लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और मेल आईडी भी मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड कर दूँ, और अब मेल आईडी पे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल राइटिंग इन द कमेंट, राइट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब तो मैं ही हूँ यहाँ पर अकेला, तो अभी कैसे डिसाइड करें कि तुम आप लोगों से वोट के थ्रू पूछा जाए। सो लेट्स डू वन थिंग, हम कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो हमने फर्स्ट कर लिया, तो थर्ड देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 3। सो व्हाट इट इज सेइंग, you are provided with this thing, you're provided with a subset, and the third element is actually an integer, right? थर्ड एलिमेंट इज एक्चुअली एन इंटीजर। तो उसको कैसे वर्क करेंगे, मैं यहां पर पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, राइट, you stay here, question. So you have s which is x1, x2, x3, right, such that your last element is actually an integer. Now अब चारों प्रॉपर्टीज अपने रिकॉल करो, ये कहां प्रॉब्लम कर सकता है। ध्यान रहे, प्रॉब्लम यही होगी जहां कंडीशन दी होगी, कहीं और प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रहे, ये जो कंडीशन में दी हुई ना प्रॉब्लम, ये कंडीशन ही क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि थर्ड एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ लोचा है। तो क्या लोचा है देखते हैं। अच्छा, अगर हम क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखना चाहें, तो दो इंटीजर्स को ऐड करो, इंटीजर ही मिलने वाला है, यानी कि कोई इशू नहीं इसमें। सेकंड प्रॉपर्टी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या यहां प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, अगर मैं i को, यानी कि x3 को इंटीजर है, सपोज 2 है, 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8, वो इंटीजर है। लेकिन अगर मैंने 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, तो 5 हो गया, यहां पर भी कोई इशू नहीं है। अब 2 को आप मल्टीप्लाई करो 1.357, क्या ये इंटीजर आएगा, नो, इट्स नॉट एन इंटीजर नाउ, राइट, क्योंकि अब चीजें बदल गई। तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है। तो वही ये तरीका है एक्चुअली, अपनी चारों प्रॉपर्टीज ध्यान में रखो, और जो भी आपको कंडीशन प्रोवाइडेड है यहाँ पर, उस कंडीशन पर फोकस करो, ऑलराइट, उस कंडीशन में फोकस करोगे तो अपने आप समस्या सामने आ जाएगी, अच्छा कहाँ समस्या हो रही है। सो व्हाट यू विल डू, अगेन सॉल्यूशन, लेट अल्फा एक्चुअली इट इज बिलोंगिंग टू एस सच दैट, अभी मेरे पास स्पेस है तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं नीचे लिखता इसको, अल्फा इक्वल टू सम अल्फा बनी हो गया, आई एम सॉरी फॉर दिस, x1, x2, x3, राइट, ठीक है। अब ये कंडीशन ध्यान रखना दैट i1, ये लास्ट वाला एलिमेंट, सॉरी x3 इसका मतलब लास्ट एलिमेंट, इट्स नॉट काइंड ऑफ ये x3 हो गया तो x3 ही रखना है। अगर यहाँ पर आप x3 प्राइम रखते हैं ना, तो वो भी लास्ट का एलिमेंट है, उसको भी ये कंडीशन फॉलो करनी है, ऑलराइट, ठीक है ना। तो हमें केवल लोकेशन देखनी है, उसकी पोजीशन कहाँ पर है एलिमेंट, ऑलराइट, चलो अच्छा, ठीक है। तो चेकिंग, अगेन आई एम सेइंग, जैसा मैंने कहा था, मैं लास्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग पहले सकते हो, फॉर द गिवन वेक्टर चेकिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस तरह, चलो उस तरह से लिख देता हूँ, फॉर द गिवन वेक्टर और फॉर द गिवन सेट सबसेट, let us verify closure property, right, with respect to scalar multiplication.
राइट, विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब हम एक ऐसा स्केलर लेंगे जो कि एक रियल नंबर है, राइट। तो ध्यान रहे, रियल नंबर तो किसी भी सेंस में रियल नंबर का प्रोडक्ट विद इंटीजर इज नॉट नेसेसरी दैट इट्स ऑलवेज इंटीजर, राइट। हमने देखा 2.5 से मल्टीप्लाई करें 2 को तो समझ लो इंटीजर मिल रहा है, बट अगर 2.1 3 4 7 5 6 7 कुछ भी ऐसा बड़ा सा नंबर ले लो, अब 2 से मल्टीप्लाई करो नहीं मिलेगा इंटीजर, राइट। सो लेट्स डू दैट। लेट k belongs to real number be a scalar। अब एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये स्केलर हो ही गया, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, राइट। इट्स लेट k belongs to r, then think of multiplying k with alpha. What you will get? You'll get k times x1, then k times x2, then k times x3. Now what you got is k times x3 is not belonging to I. This implies that your alpha, that is k times alpha, is not belonging to S, right? This particular set, right? And this particular we got here. Hence, given subset is not a subspace in R cube, or you say of R cube, right? Subspace of R cube instead, if you want to put it like. All right, getting it? So this is how to solve. ठीक है, प्रेजेंटेशन हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करो, और बेसिकली हमें लगता है कि कितने 5 and 4 8 क्वेश्चंस, इसमें से एक कंपलसरी, 2 क्वेश्चंस कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5, दीज आर कंपलसरी एक्चुअली, और बाकी दोनों में से हमें किसी में से दो, आई मीन एटलीस्ट 1 हर में से अटेंड करना है, राइट, और 5 क्वेश्चंस इन टोटल, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई विल वेरीफाई इट, राइट। तो आप देखोगे, अगर लगता है क्वेश्चन नाम से सुन के कि हाँ कम ही क्वेश्चंस हैं, बट यू विल फाइंड क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 5 उसमें खुद 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस इसके हो गए, राइट, सब पार्ट्स आई मीन, राइट। उसके बाद हर एक क्वेश्चंस के मिनिमम 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, इट कैन गो टू 3, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि पहला पार्ट है उसमें 2 सब पार्ट है, तो इट मीन्स अब तो कहानी लटक जाएगी अगर हम स्लो चलेंगे तो वी हैव टू बी फास्ट, ऑलराइट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग, और अब कोई और एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में से ये क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट, दिस पार्टिकुलर, यहाँ से तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, राइट, और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन ट्राई एट होम एज अ होमवर्क। सो think of these questions, these are your homework, right? Now let's work on the next one, that is which of the following subset of R cube are subspaces and why. यहाँ पर why not, और यहाँ पर these are, right? So these two different things, different, this is the opposite, we need to check, right, only. So let's look for the first one, this x1 x2 x3, and what is the condition given? The condition is here this thing. Now what it's saying, that x1 minus 2x2 equal to 5. So check where it can create an issue, where it can create an issue. Remember, जब भी आपको ऐसा मिलेगा ना कि कोई इक्वेशन पर्टिकुलर दे दिया और यहाँ पर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है, राइट, कोई नॉन जीरो स्केलर है यहाँ पर, तो सतर्क हो जाओ वहाँ पर कि ज़्यादा चांसेस हैं आपका जो वेक्टर एडिशन है वो डिस्क्वालीफाई होगा, ऑलराइट, जो वेक्टर एडिशन है दैट विल गो डिस्क्वालीफाई। तो लेट्स सी यहाँ पर हमारा वेक्टर एडिशन डिस्क्वालीफाई होता है या नहीं होता है, चलो चेक करते हैं, ठीक है। सो इट इज x1 x2 x1 x1 minus 2x2 plus 5 equal to 5. Question 2 set 1. So it is, let's say we have, it is actually solution, not question. So let's say S is what? It is x1 comma x2 comma x3, right, such that
You are provided the x1 minus 2x2 equal to 5. Let me verify. Actually, I'm not good at looking at something and solving a question. Yes, it is there. Okay, so it is what we have now, and this is what the condition they're imposing on our calculations. All right, so let us see what we can do. चलो इसको क्लोजर अंडर वेक्टर एडिशन चेक कर लें पहले. So for the given vector, or for the given, not vector, subset, right? For the given subset, let us verify closure property with respect to addition, right? We are verifying with respect to addition. All right. एक्चुअली इंटरेक्टिव सेशन तब रहता है जब सामने आप लोग बैठे हैं क्योंकि अदरवाइज उस वक्त मैं पूछ सकता था एडिशन से चलें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से चलें, आइडेंटिटी चूज करें, क्या चूज करें, क्या करें. अभी तो ऐसा कुछ पूछ नहीं सकता. ओके, सो ठीक है, इससे पहले ये शट डाउन हो हम लोग बंद इसको आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लाइट चली गई है. ठीक है, सो फॉर द गिवन सबसेट ऑर्डर हमें वेरीफाई करना. तो लेट्स से अल्फा, हमें अल्फा एंड बीटा एक्चुअली बिलोंगिंग टू एस ले लेते हैं, राइट? ठीक है, सच दैट, क्योंकि हमें कुछ डेफिनेशन लेनी होगी, सच दैट योर अल्फा इज एक्चुअली, लेट्स से इट इज x1, x2 and x3, right? And your beta is x1 prime, x2 prime, x3 prime. If you're not comfortable in working with prime, you can choose y1, y2 this way, right? Okay, तो वैसा भी चूज कर सकते हो. All right, now closer with respect to addition चूज कर रहे हैं. इसका मतलब हमें चेक करना है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा. क्या होगा भाई? अगर आप ऐसे ही ऐड करना चाहो तो ये होगा x1 प्लस x1 प्राइम, देन x2 प्लस x2 प्राइम, देन x3 प्लस x3 प्राइम, राइट? अच्छा, अब जैसे ही आपने ये चूज किए यहाँ पर, तो इसके लिए कंडीशन निकल के आई सामने, दैट इज योर x1 माइनस 2x2 इज गोइंग टू बी 5. सिमिलरली यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आई इसके लिए, that is your x1 prime minus 2x2 prime is going to be 5. So keep in mind these are going to be there, right? अब वेरीफाई करो जरा कि आपके लास्ट के लिए ये वेरीफाई, आई मीन जो आपने सॉल्यूशन लाया यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, इसके लिए क्या वेरीफाई हो रही है कंडीशन, राइट? तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x1 प्लस x1 प्राइम, दैट इज x1 प्राइम, राइट? यहाँ पर सच दैट लगाना है, ठीक, सच दैट, because the condition ना कि x1 prime minus 2 times of x1 is x2 plus x2 prime is going to be what? Is going to be 5. We need to check. Let me switch on the power actually, just a second. I'm sorry for this. Let us continue. चलो चेक करते हैं. तो ये क्या हो गया, और इन दोनों को यूज करना, राइट? तो इनको या तो सेपरेटली इक्वेशंस लिस्ट आउट कर लो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट? सो इट विल बी x1, राइट, माइनस 2 टाइम्स ऑफ x2 एंड देन इट इज x1 प्राइम minus 2 times of x2 prime equal to 5. Now use, so from 1 and 2, what you'll get, it is 5, and the other is also 5, is equal to 5. Is it? Not. So it means ये satisfy नहीं कर रहा है. इसका मतलब आपका ये दोनों particular examples in the particular elements are not following the condition provided in the question itself. Getting it?
अगर ये नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या कहोगे? इट मीन्स सिंपली अल्फा प्लस बीटा आर नॉट इन एस, दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ एस, राइट? इट मीन्स you got S is not a subspace with respect to yeah, with respect to कह सकते हो, ठीक है, R cube और सबसेट इन R cube, सबसेट ऑन R cube, इट्स फाइन, ऑलराइट। विद रिस्पेक्ट टू बहुत ज़्यादा जम नहीं रहा है, तो इट्स बेटर टू राइट इन R, राइट, या ऑफ R भी चलेगा, ऑफ ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, ऑफ लगा दो। सो इट्स नॉट अ सबस्पेस ऑफ R cube, गेटिंग इट नाउ? तो ये नहीं है, राइट, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, कौन सा है, ढूंढने के लिए तो सब करना ही पड़ेगा सबको, तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट। नाउ थिंक फॉर द नेक्स्ट वन। अब देखो जरा क्या सेकंड हो सकता है, उसी ट्रिक को अप्लाई करो, द ट्रिक विच आई टॉट, नॉट टॉट एक्चुअली, वी डिस्कस्ड, ठीक है, दिस पर्टिकुलर। यहां पर फिर से नॉन जीरो कांस्टेंट बैठा हुआ है। अगर ये नॉन जीरो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर एडिशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, राइट, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, राइट। अब जो इन्फॉर्मेशन है और जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे कह रहा हूँ कि ये शायद नहीं होगा, ठीक है, बट बेटर टू डू इट और ट्राई इट एट होम, राइट। अच्छा, एक अच्छी बात है इसमें कि इसके जो आंसर्स हैं आपको MCGen में, वो आपके जो बैक साइड में है बुक के, वो मिल जाएंगे, राइट, सो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर एज वेल। अच्छा, यहाँ ये देखो, ये जीरो है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आपका सबस्पेस होगा। चलो एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, रेस्ट बाकी सब जो है होमवर्क के तौर पर कर लेंगे, ठीक है। तो ये है x1 x2 x3, जस्ट कंडीशन देख लो, 2x1 माइनस 3x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। ओके, सो वी हैव द क्वेश्चन solution of 2 and third one, right? That is, we have S, which is x1 comma x2 x3 such that let me check the condition. I'm sorry for this, actually I'm not very good in kind of 2x1 minus 2x2 3x2 2x1 minus 3x2 plus x3. So it's going to be 2x1 minus 3x2 plus x3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्लोजर हो सकता है वेक्टर एडिशन, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन पे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम होती है तो ये जो हमें कंडीशन दी हुई ना, इस कंडीशन में जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हैं उन्हीं के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी तो सारे ही इन्वॉल्व हो गए इसमें, तो इसका मतलब सभी को चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है दैट वी हैव टू गो थ्रू ऑल द 4 प्रॉपर्टीज। पहला क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन चेक करो, क्या पॉसिबल है, हो जाएगा, चेक कर लेते हैं भाई। लेट हम नंबर 1 डाल के ही चलते हैं इसको, सॉरी। सो फर्स्ट चेकिंग क्लोजर प्रॉपर्टी, right, with respect to addition. चलो चेक करते हैं। Let we have alpha and beta belonging to S, all right, such that we have alpha equal to, let's say, x1 x2। अच्छा, अब यहाँ पर भी x1 लिखा हुआ है, तो अब कंफ्यूज मत होना, आप चाहो तो इसकी जगह A B C भी लिख सकते हो, राइट। There's no harm in writing A1 A2, that's also good, right? You can start with that also as well, okay. All right, so x3, then you have to write 2x1 minus 3x2 plus x3 going to be 0. Let's say equation 1, right? And you got beta, which is going to be x1 prime
comma x2 prime, comma x3 prime, right? It implies that it's 2, bro. It's not 0. 2x1 prime minus 3x2 prime, then plus x3 prime, going to be 0. That's it is second equation. All right. Our task is to verify whether alpha plus beta is falling in S or not. So let's say this alpha plus beta equal to what is going to be. If you want to add this in row format, you can add in row format, or you can, if you want to add in column format, you can add in column format as well. ठीक है, तो अभी रो फॉर्मेट में रखा हो तो रो में ऐड कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है. x1 प्राइम कमा x2 प्लस x2 प्राइम कमा x3 प्लस x3 प्राइम, राइट. नाउ और you need to check such that your alpha is 2 times x1 plus x1 prime, right, minus 3 times x2 plus x2 prime plus x3 plus x3 prime. This must go to 0. So check it. So it's going to be 2 times of x1 minus 3 times of x2 plus x3, right, and then plus 2 times of x1 prime minus 3 times of x2 prime plus x3 prime. That's going to be 0. So think of from 1 and 2, from equation 1 and 2, that is from equation 1 and 2. What are you getting? You're getting 0 plus 0, so that's 0. So it's totally good. Implies that your alpha plus beta falls in S, right? So it means it is closer with respect to vector addition. That is what we are expecting actually, because the right hand side here is 0. It's a 0 scalar, right? अगर ये नॉन जीरो स्केलर होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करता, लेकिन अभी 0 है तो अपनी बात बन गई, and it is true. Now let us see whether it is true with the vector addition, I mean scalar multiplication or not, right? Second checking is checking closure property with respect to scalar multiplication, right? So let we have some k. Okay, let us see whether looking at the condition whether it is going to harm us or not, right? So anything which is kind of putting some restriction that it cannot be negative or positive, I guess there is no such thing. So in general you can think of one k, right? Let's say k belongs to R. Okay, then k times alpha will be what? It's alpha. It will be k times x1, right, comma k times of x2, comma k times of x3, right, such that you have k times of x1, 2 times of that element, minus 3 times of the second element, plus the next, that is k x3, is going to be 0. Now take this k common, so you're left with this thing, 2x1 minus 3x2 plus x3 going to be 0. Now think of this entire thing. So from equation 1, see this entire thing is what? 0. Look at 1. So this is 0. So it means it's k times 0 is 0. This simply says that your k times alpha belongs to S. So it is closer with respect to scalar multiplication. Now let us see whether there's some identity is existing there or not, right? So third, existence of identity. Identity element. Identity means we must have something which is if we are adding to alpha, we should get alpha, right? Let there exist some E such that
you're adding alpha with E, or you're adding E with alpha, you're going to get theta, right? That is what? That is, sorry, it's alpha, not theta, alpha. It means there is no change, right? There is no change. So that's what the use of identity. Now, if it is happening, it means what? Your E must be alpha minus alpha. That's going to be theta. That is what? Zero vector, if you remember. That is a zero vector. So it simply says that it is actually 0, 0, 0. It only happens if it is 2. And as your first element 2 times 0 minus 3 times 0 plus 0 is 0, implies that your E is actually belongs to S, right? Because it is following this particular condition. All right, so it means identity is also there. Now, fourth thing, existence of inverse. Inverse element. So element, let's say we have there exists some alpha prime such that if you're adding this alpha prime to alpha, so you are getting E. That is the identity we had. So how we can do this? So, you know, if we are going to take alpha prime here and E minus alpha this way, so it's going to be E minus alpha is simply minus alpha. All right, it's simply minus alpha. And minus alpha, if we can look, it is what? It's going to minus x1, then minus x2, then minus x3, isn't it? Right? As you can find, you need to verify the last equation, the condition with these elements as well. As you can find, minus 2 times x1 minus 3 times of minus x2, then minus, it's kind of plus of minus x3, right? Check what is happening. It is minus 2 times x1 minus 2 times 3 times x2, it's 3 plus x3, right? So from equation 1, what do you notice? We notice that it's going to minus 2 minus 0. That's actually 0. This simply says that your alpha prime is also there in S, right? Your alpha prime is also there in S. Therefore, what you can say? Therefore, S is a subspace of RQ. All right, so we got the answer. We have invested so much time here actually by solving this. So you can find if it is the entire page given to you, it means you need to work for each and everything. See this entire thing, right? It took reasonable space. All right, okay, so I guess we should leave it here and we can continue in the next session. And you guys please go through these questions and try working all these questions as your homework. And also on these particular, right, remember, be alert with this kind of questions, be alert with this kind of questions, right? If it is non-zero, although it can be, you can bring it on the other side and it will become 0, right? So it's fine. But if it's a constant, not a variable, then you have to kind of be alert, right? Like this one, it is short of giving you one condition that it should not be lesser than 3, right? What if you're looking for minus 3? If you multiply with a negative number, what will happen then? Right, so those things. And with the functions, no need to afraid. First try these and let me know if you are able to do those. Otherwise, we can do it here. And what are the if even function and odd functions? So just think of one set which is containing all the even functions. So, all right, I'll include these in next session. Okay, don't worry. I'll include these in next session. Okay. Okay, so take care. We'll meet in next session. Till then, bye bye.
Take care.